Hello viewers, how are you? This video is specially prepared on the request of some of my students who have been consistently asking me since last 8 days to prepare a video on multiple choice on the topic of income tax. So this is the video. हालांकि इस वीडियो में मैं ऑप्शंस नहीं देने वाली हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स की तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ नहीं रही हूँ तो मैं सीधे ही आपको आंसर बता दूंगी, तो इट विल सेव योर टाइम आल्सो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन income tax was first levied in India. So income tax was first levied in India in the year 1860. आपने यदि मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स पहली बार इंडिया में 1860 में लगाया गया था बाय सर जेम्स विल्सन. 1857 की मिलिट्री म्यूटिनी के बाद जो गवर्नमेंट को लॉसेस हुए थे, वो लॉसेस को रिकवर करने के लिए इनकम टैक्स इंडिया में पहली बार 1860 में लगाया गया था. इनकम टैक्स इज ऑब्वियसली इट इज अ डायरेक्ट टैक्स. ऑप्शंस सामने आए तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है. तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, मीन्स इट इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बिजनेस टैक्स और नन ऑफ दीज. तो इट इज direct tax. Then rate of income tax is fixed under. तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेट फिक्स किए जाते हैं क्या? नहीं. इनकम टैक्स एक्ट बन गया था 1961 में, और जो रेट्स फिक्स किए जाते हैं वो हर साल एक फाइनेंस एक्ट बनाया जाता है, उसके अंतर्गत रेट्स फिक्स किए जाते हैं. देन हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर to compute gross total income of an assessee? So there are 5 heads of income: income from salary, income from house property, profits and gains from business or profession, capital gains, and income from other sources. Then the present income tax act is known as Income Tax Act 1961. Okay. Then the definition of income is inclusive, exclusive, complex, simple. So it is an inclusive definition, क्योंकि this definition of income is given and there are so many clauses given in it, और इससे मिलता जुलता कुछ भी है तो that is income. इस तरीके से है वो, मतलब it includes this and. Okay. Then Income Tax Act was passed in 1961. It came into force in 1962. Okay. Then the term previous year means financial year, calendar year, accounting year, or the financial year before the assessment year. So previous year means the financial year before the assessment year. Okay. Then income tax is computed on income. Income tax is computed on income. The period of assessment year is 1st April to 31st March. The options can be anything, but you have to keep in mind that the period of assessment year is 1st April to 31st March. Now suppose in the same way, is the period of previous year fixed? So of course वैसे हम सोचते हैं कि 12 महीने का प्रीवियस ईयर रहेगा, लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने यदि 30 मार्च को काम शुरू किया, ठीक है, तो उसका प्रीवियस ईयर 30 मार्च से 31 मार्च तक का ही रहेगा, मतलब 2 ही दिन का रहेगा, ये याद रखिएगा. ओके. इनकम टैक्स इज लेविड ऑन दोज इंडिविजुअल्स whose income is more than the exempted limit in the previous year. हालांकि ये क्वेश्चन again depends on which options you are having. So here suppose I am telling you that income tax is levied on those individuals, option 1, whose income is less than the exempted limit in any previous year. तो obviously exempted limit से यदि कम है तो income tax लगना नहीं है. Second, whose income is more than the exempted limit. तो yes, ये ऑप्शन हो सकता है. बाकी के ऑप्शंस देखने के बाद आप एनालाइज कर सकते हैं. ओके. देन हुज इनकम इज अप टू ₹2,45,000 इन प्रीवियस ईयर, तो नॉट एप्लीकेबल. देन हुज इनकम इज अप टू ₹2,50,000,
नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि 2,50,000 से ऊपर ही इनकम टैक्स लगना है. देन इनकम टैक्स वाज levied in India first time by Sir James Wilson. Okay. Then exemption limit for the assessment year 2022-23 for a non-resident is rupees 2,50,000. Okay. यदि रेसिडेंट है तो फिर उनकी एज के हिसाब से अलग अलग फर्क पड़ेगा. मतलब वो सीनियर सिटीजन यदि हैं तो फिर अलग, सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो अलग, और यदि वो बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो अलग. बट यदि नॉन रेसिडेंट हैं तो उनके लिए एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 तक इट इज एग्जम्प्टेड, उससे ऊपर इट इज टैक्सेबल. Then exemption limit for the assessment year 2022-23 for super senior citizen resident of India is rupees 5 lakhs. Okay. Then exemption limit for the assessment year 2022-23 for a women resident in India and who is of the age of 60 years or more but less than 80 years is rupees 3 lakh. But just keep in mind कि for a women देने के बाद आपको confuse नहीं होना है. इस कुछ वर्ष पहले ऐसा था कि विमेन के लिए थोड़ा सा टैक्स स्लैब अलग रहता था, मतलब एग्जम्पशन लिमिट अलग थी और मेल के लिए अलग थी. लेकिन अभी कुछ वर्षों से देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर द एग्जम्पशन लिमिट फॉर मेल और फीमेल. So if such thing comes, it is just over there to confuse you. Okay. Then income tax department works under the Central Board of Direct Taxes. Then under the Income Tax Act, person means Hindu undivided family, company, local authority, all of these. So here the answer is all of these. Then sum of various heads of income is known as gross total income. Okay. The sum is known as gross total income, and after the deductions allowable under chapter 6A, it is known as total income. Then a senior citizen shall be that individual for the purpose of income tax whose age is more than the following. So it is more than 60 years. Previous year always ends on 31st March. Even if your previous year for that particular year is commencing on 30th March, in spite of that also it will end on 31st March. Okay. And then what would be the assessment year for the financial year 2021-22? So it will be 2022-23. मतलब 2021-22 यदि ये फाइनेंशियल ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? तो इसका असेसमेंट ईयर 22-23 रहेगा. यदि 2022-23 असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? तो 2021-22 will be the previous year. I hope these concepts are clear. These answers are clear and they will be helpful to you. So kindly stay tuned. Thank you.